has moved on to another related concept, which is called elasticity of demand. Well, have you ever fiddled or played with a rubber band? The more you pull it, the more it stretches. But if you keep on pulling it beyond a point, it will break. So this is called its stretchability. How much, कितना वो खिंच सकता है, कितनी उसमें stretchability है, कितनी उसमें elasticity है. So अभी हमें बात करनी है डिमांड की elasticity की. We know कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंजेस आते हैं, पर कितने? How much? For certain commodities these changes will be more, or for certain commodities these changes will be less. Basically, the concept of elasticity, friends, means that when we measure the responsiveness of one variable to change in another, and it can be of three types: price, इनकम एंड क्रॉस. अगर आप पढ़ते हो कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी. पर अगर आप पढ़ते हो कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है, तो इसको क्या कहेंगे? इनकम इलास्टिसिटी. सिमिलरली, अगर हम एक दूसरी कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज आने से उससे रिलेटेड, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो या सब्सटीट्यूट गुड हो, उसके चेंजेस, डिमांड के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी. But as far as your syllabi is concerned, we will be concentrating only on price elasticity, that is, how much demand changes due to change in price of the commodity. You can see in the diagram very carefully that on the horizontal axis we have taken quantity, on the vertical axis we have taken price. Then there's one line which is just parallel to the horizontal axis. This means that on the same price demand can go up to any point. So this means demand is perfectly elastic or infinitely elastic. There's another line which is parallel to the y-axis or a vertical line. This means that in spite of the price changes, the demand is not moving at all. So the demand is fixed. Can you tell me for what goods the demand would be like this? Well, it will be for necessities. चाहे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो या थोड़ा कम हो, आटा, नमक, प्याज, ये तकरीबन हम जितना लेते हैं उतना ही लेते हैं. Then, if the changes in demand are just equal to the changes in price, if the price increases by 5%, the demand decreases by 5%, this means that the elasticity is 1. And if the changes in demand are much more than the changes in price, demand is greater than elastic, greater than 1 elastic, that means more elastic. और अगर प्राइस में चेंजेस आने की वजह से डिमांड में चेंजेस कम आते हैं, कि प्राइसेस गिर गए 10% से, लेकिन डिमांड बढ़ी सिर्फ 5% से, सो दिस मीन्स कि इसमें डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी कम है या इस चीज़ की डिमांड में स्ट्रेचेबिलिटी कम है. अब डिफरेंट सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट्स ने डिफरेंट मेथड्स हमें दिए हैं इसको मेजर करने के लिए. जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे, दैट इज़ परसेंटेज मेथड, विच इज़ वेरी सिंपल. वी सिंपली कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड and we divide it by the percentage change in price. So, in the next section, we will also be dealing with some numericals of how to calculate elasticity of demand by percentage method. So, it will be explained in the next section. Second method is total expenditure method. Some economists have tried to fix a relationship between total expenditure and price. If the price of a thing increases or decreases, और टोटल आप उस चीज़ को बाय करते हैं जितना, उसका तो आप कम ज़्यादा करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड तो कम ज़्यादा होगी, बट आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहता है? कांस्टेंट. तो उस केस में इलास्टिसिटी विल बी टर्म्ड एज यूनिटी, और दैट विल बी कॉल्ड एज unity elasticity of demand. Now, in case your price decreases or increases, but the demand goes in the opposite direction, that means कि डिमांड तो इंक्रीज होने से प्राइस के गिरेगी और डिक्रीज होने से बढ़ेगी, पर टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी इसके साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. मींस अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई तो आपने उसकी डिमांड इतनी कम कर दी कि टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, और वाइस वर्सा जब उसकी डिक्रीज हुई डिमांड तो आपने उसकी डिमांड इतनी बढ़ा दी कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया. तो दैट मीन्स उसमें इलास्टिसिटी क्या थी? बहुत ज़्यादा. सो वी कैन टर्म इट एज ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड. I'm sure now less than elasticity, you can explain it on your own, but let me just do it for you. See, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो आपकी उस चीज़ के लिए
डिमांड कम हो रही है लेकिन इतनी कम नहीं हो रही और इसीलिए आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। और जब आपकी डिमांड डिक्रीज करते हैं ड्यू टू increase in price, it's less. This means that elasticity was less. On the other hand, if price कम होता है और आप उसकी वजह से डिमांड को increase करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं करते और आपका टोटल एक्सपेंडिचर पहले से कम रहता है, so this means that elasticity is less. There is not much change in the demand. So for lesser elasticity, it will be upward sloping. For unitary elasticity, it will be a parallel line to the y-axis, and it will be downward sloping for the greater elasticity. It is very clearly shown in the diagram in front of you. Now, we move on to the third method, that is the geometric method. Geometrically, हम एक demand curve के ऊपर उसकी स्लोप से अंदाज़ा तो लगा सकते हैं उसकी इलास्टिसिटी का, बट डिफरेंट पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी डिफरेंट रहती है। और जब हम ज़्यादा टेक्निकल होकर एक एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। And economists have given us a very simple formula for that. We just have to see the lower portion divided by upper portion. So I have drawn in front of you a demand curve where elasticity on different points is shown very clearly. Clear? So you can just calculate it on your own, and we can do it for one point here. Supposedly for point A, the elasticity is 1. How we calculated it? AB divided by AD. Since both the portions are same, so that means the result is 1. Similarly, we can say that for different points, we can calculate it by dividing the lower segment upon the upper segment. Now, my dear friends, to conclude this session, we are still left with the various factors which affect the elasticity of demand. So let me explain it to you. The first factor which affect the elasticity of demand is nature of the product. The goods that we buy can be categorized into 3 sections. One is necessities, the other is comforts, and the third is luxuries. अब जो necessities हैं वो तो हमको लेनी है, और जो luxuries हैं वो rich class को लेनी ही लेनी है. So this means that for necessities and luxuries, demands will be lesser elastic, whereas for comforts it will be more elastic. If, going on to the second point, if substitutes for a good are available, तो उसकी prices बढ़ने या कम होने पर आपका substitutes को लेना या ना लेना possible है. So this means इसकी demand में भी elasticity ज़्यादा रहेगी, changes ज़्यादा आ सकते हैं. एंड अगर किसी चीज़ को यूज़ करते हैं आप, पर वो आपके एक्सपेंडिचर का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा है, जैसे कि न्यूज़पेपर. अगर न्यूज़पेपर का बिल आप 80 रुपीज़ की बजाय पर मंथ 85 दे देंगे तो इट विल नॉट मेक अ बिग डिफरेंस. तो उनके प्राइसेस से आपकी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा. दैट मीन्स डिमांड विल बी लेस इलास्टिक. बट इफ़ अ थिंग फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ योर एक्सपेंडिचर और उसके प्राइसेस में चेंजेस आते हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी डिमांड को ज़्यादा चेंज करेंगे. तो इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड will be more. Now, if a thing has different uses, that is the fourth point. अगर different uses हैं तभी तो उसके प्राइस में changes आने से हम उसको ज़्यादा लेंगे. अगर एक ही use है तो कितना ज़्यादा ले लेंगे. So that means different uses हैं तो elasticity ज़्यादा, different uses नहीं है तो elasticity कम. That's very clear to you, I guess now. Now the next point is postponement of the use. If a thing's price is changing, but I cannot postpone the use, because let me give you an example. If there's a wedding at my place और gold का rate बहुत बढ़ रहा है तो can I afford to skip gold? No. So that means I will be buying at a higher price also. तो elasticity will be less. But अगर मैं postpone कर सकती हूँ तो elasticity will be more, because तब demand में ज़्यादा changes आएंगे. Then habit of the consumer. अगर consumer की किसी चीज़ के लिए habit बन जाती है तो consumer उस चीज़ को लेगा ही लेगा, irrespective of the price changes. For example, cigarette addicts will buy cigarette even at a higher price. So that will say lesser elasticity. और अगर habit नहीं बनती तो elasticity will be more. Then the last and not the least point is time period. Shorter the time period, the lesser will be the price elasticity of demand, because we don't have much options, we don't have time at our disposal, and longer the time period, greater will be the price elasticity of demand. I hope you all understood it very nicely, and you can enjoy now going through and studying the concepts of demand, consumer analysis, basic economic theory, and elasticity of demand.
Have a happy time. Thank you.